guys, welcome back to my channel. So today I'm gonna do Korean dewy glass skin makeup and also I'm going to show you something interesting, so wait for it. So I'm going to start with the skin prep जो कि मैं usually करती हूँ. So first step is always a good moisturizer. So let's apply. So सबसे पहले मैं अपना बेस मेकअप कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि आज मेन फोकस है एक dewy glass skin. So let's do it quick. I'm going to apply lenses. Let's apply concealer. आज मैं बेस को थोड़ा नेचुरल और स्किन लाइक ही रखूंगी. Now let's blend with this. Today I'm gonna show you guys कि how these dewy girlies के पास इतनी ज्यादा glowing skin होती है. इतना सारा glow आता कहाँ से है? I am really excited today, so let's do it fast. I'm skipping foundation today because I don't want to make it cakey. Let's apply compact. जिससे मेरा concealer set हो जाए. Make sure to apply a very light amount. Let's move on to eyebrows. Nose contour is mandatory. Okay, so the base makeup is done. Now I'm gonna move on to blush. So for the blush, I'm gonna apply this lipstick as a blush. This is from Posh Beauty and just look at the shade. So I'm taking a bit in my brush and apply it here. Look, कितना cute shade है. Let's take more. Look at this. Let's apply it in my chin as well. So now guys, let me show you the diva of this whole makeup tutorial. So ये है Posh Beauty का Icy Glow Highlighter Jelly Stick. Let me show you every shade. Oh my god, the packaging. Let's open it. Oh my god. Guys, just see this. Honestly, इसका टेक्सचर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज ये नॉर्मल पाउडर हाइलाइटर जैसा बिल्कुल नहीं है. ये शेड है पिंक. लेट्स अप्लाई दिस. को फिंगर से ब्लेंड करते हैं. इसका फॉर्मूला वाटर बेस्ड जेली फॉर्मूला है एज यू कैन सी. सो स्किन पे लगाने के बाद कुछ भी हैवी फील नहीं होता है. लुक एट दिस. कोई चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है. इट्स गिविंग दैट मोर वेट ग्लास स्किन लुक विच आई लाइक. ब्लेंड करने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस अपने दो उंगली से ऐसे डैप कर दो. एक साइड पे हाईलाइटर, एक साइड पे नो हाईलाइटर. यू कैन एक्चुअली सी द डिफरेंस. सो ये है एक और शेड जो कि है सिल्वर. ये कूल टोन मेकअप के लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है. लेट्स अप्लाई दिस एज वेल. इसको अप्लाई करते वक्त एक चीज ध्यान में रखना, बहुत ही कम प्रोडक्ट लेना है एंड स्टिक को हमेशा 90 डिग्री एंगल पे रखना है क्योंकि ये जेली फॉर्म में है. लुक एट दिस. एज समवन जिसको हाइलाइटर से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, दिस इज गोइंग टू बी माई फेवरेट. नेक्स्ट आई हैव दिस शेड शैम्पेन. Just look at this. It is giving more of that golden highlighter vibe. You can also apply it on your whole face क्योंकि ये बिल्कुल भी ज्यादा heavy नहीं लगता. Next I have also this shade. So this shade is gold. Let's apply it. Literally giving that gold vibe. Can you see that actual wet look? ऑल्सो अप्लाई करते टाइम मुझे इसका रियली कूल सेंसेशन फील हो रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग है. एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट एज अ स्ट्रोब स्टिक एंड अप्लाई इट एट योर हाई पॉइंट्स, नोज, फोरहेड, चिन, जहां भी आपको चाहिए. मैं थोड़ा सा लाइट रखूंगी क्योंकि मुझे ये लुक थोड़ा सा नेचुरल चाहिए. पर्सनली मुझे इसका फिनिश बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है. अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए बट विदाउट ग्लिटर पार्टिकल्स देन दिस काइंड ऑफ फिनिश इज रियली नाइस. और आपको इतने सारे प्यारे प्यारे शेड्स मिल जाते हैं. गाइज, दिस इज वर्थ चेकिंग आउट. ऑल द 4 शेड्स आर सो अडोरेबल. नाउ मूव ऑन टू आई मेकअप. सो आई मेकअप भी आज मैं बहुत ज्यादा मिनिमल रखूंगी. सो आई एम गोइंग इन विद द बेस शेड.
Then I'm going to apply a little bit peach shade. Then I'm going to apply this brown kajal. It's also from Posh Beauty. Look at the tip. Itni thin tip. I'm gonna draw a wing over here. Draw an aegyosal. Okay, so now let's apply mascara. Let's move on to lips. सबसे पहले मैं अपने natural lip color को hide कर दूंगी. Then I'm gonna take this lipstick from Posh Beauty, जिसको मैंने as a blush भी apply किया था. Shade is Date Night 118. Wow. Look at this texture, guys. Now let's finish this whole look with the gloss. Okay, so this is the whole glowy dewy makeup. Just look at this glow, guys. Without these highlighters, this makeup was impossible. Let me know in the comment section what do you guys think about this whole makeup look, and don't forget to check Posh Beauty highlighters. Trust me guys, they are literally worth it. Comment में जरूर बताना आपको कौन सा shade सबसे ज्यादा अच्छा लगा. My favorite was all of them. I'll see you in the next video. Bye bye.